अलैकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी फेवरेट टीचर हाजिर है आपकी एक और बहुत इंफॉर्मेटिव और एक येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 इंग्लिश क्लासेस के, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए रेलेवेंट है फॉर बोथ फेडरल एंड पेशाब बोर्ड। Before we started, dear students, please do not forget to subscribe the channel, that is MU Changing Lives. Here you can find the stuff which can change your life. And I'm your favorite teacher, Mrs. Kessel. So dear students, let's start. Today the topic is the importance of family, and we are doing its exercise. Before going through the exercise, let me just brief you about that, what the author is saying inside that very important chapter. इस चैप्टर में जैसा कि टाइटल इंडिकेट कर रहा है, ऑथर हमें बहुत अच्छे और बहुत एक मंचे हुए अंदाज से बताना चाह रहा है कि एक फैमिली की इंसानी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है. So the chapter contains few key points where he's talking about see the role of the family. Then he's talking about see what are the problems that the families have to face. For example, the split families, this families where parents are separated or divorced, or the families which are not having any member at all. So let's come with its exercise. Dear students, question number 1 is, so open your books at page number 106. First question is, what is the central idea of Keen's essay and how is it related to the title? And the answer is, the central idea of the essay is the strong social bond shared by the family and its members. The author believes that family is the first line of defense against all the ills of the society. It is the only institution that builds the healthy society. Now we are moving to answer number 2. Before doing answer number 2, let me read out the question number 2. Dear students, please open the books and see the question from the book. The question is, analyze any two paragraphs of the essay, The Importance of Family, and classify the sentences that support the main idea under the headings of definition, example, cause and effect, facts and opinion. The question means कि हमने देखना है कि हमारे पास टेक्स्ट के किसी भी पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें हमारे मेजर कंसर्न या मेन थीम को सपोर्ट करती हैं. फिर हमने उस आइडिया की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कॉज एंड फैक्ट, फैक्ट और ओपिनियन के ज़रिए बताना है कि उस आइडिया के पैराग्राफ में क्या रोल है. Now we are taking para number 2 that starts from these lines. For better or worse, the family is the first line of defense. And it ends at the line, in the lives of others. Let's see where we find the definition. The idea of this second paragraph is about the family and how it is a line of defense and what is its definition. So the main idea is related in these lines. Family is the first line of defense against dehumanization. Here the author is giving and defining what does he mean by a family. Now इस एक एग्जाम्पल देखते हैं यहीं इसी पैराग्राफ में, जिसमें ऑथर बता रहा है एक मिसाल के जरिए कि फैमिली किस तरह से एक मेजर लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट एनी डीह्यूमनाइजेशन, गैर इंसानी सलूक के बरक्स. तो इस पैराग्राफ में जो ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिलती है और वो है, वी मे एजुकेट आवर चिल्ड्रन इन द वैल्यू वी चेरिश एंड अपहोल्ड. See, you can see this, these dots which refers to that we are omitting. These are referring to the omission. ये omission show करते हैं, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कुछ words को omit किया. मैं read कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपको जहन में रहे कि वो कौन सा sentence है जिसमें जो definition हमने बताई है उसकी example मौजूद है. So that is, I am reading it. Please listen. We may educate our children in the value we cherish and teach them respect for the tradition we uphold. Then comes to cause and effect. Cause and effect means those sentences where there is a cause of some happening or occurring.
तो कोई हैपनिंग या अकरेंस का हमने वजह देखनी है, उसकी वजह तलाश करनी है, जिसको हम कॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मेजर कंसर्न था इस पैराग्राफ का कि फैमिली एक मेजर लाइन और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट डिह्यूमनाइजेशन. इस इंसिडेंट को अगर हम एक इवेंट समझें तो इसका कॉज क्या चीज बनी. इसका कॉज ये है जो इस लाइन में ऑथर बता रहा है. विद इन द प्राइवेसी ऑफ होम वी मे थिंक, स्पीक एंड वर्शिप एज वी प्लीज. The effect that is shown over here is in these lines. Loving our kin, we may gradually learn to extend kindness to strangers. Then come fact. फैक्ट की एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलती है यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि कौन से फैक्ट के बारे में बात की जा रही है. हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस तलाश करने हैं जिसमें हमें पता लगे कि एक ऐसी चीज है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जो हर जगह इस्टेब्लिश्ड है. फैक्ट कहते हैं एन इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट एवरीवेयर यूनिवर्सली एंड विच इज एक्सेप्टेड. वो हमें मिलती है इस सेंटेंस में. द फैमिली इज द नेचुरल स्कूल ऑफ लव. नाउ दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड कंडीशन एंड फैक्ट बिकॉज फैमिली इज द unconditionally it is the natural school of love everywhere. See, it is a school of love in America, in Pakistan, everywhere. फिर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे जो लास्ट पार्ट है हमारा वो ये है कि ओपिनियन हमें कहाँ पे नजर आ रही है. ओपिनियन से मुराद है पर्सनल व्यू. वैसे तो तमाम पैराग्राफ की हर लाइन में ही ऑथर का एक पर्सनल व्यू है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज़ ईजिएस्ट टू लव आवर ओन चिल्ड्रन अनकंडीशनली. इट इज़ ईजिएस्ट टू लव आवर चिल्ड्रन अनकंडीशनली. तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑथर ने अपनी जो है वो ओपिनियन हमें दी है और अपनी राय का इजहार किया है कि हम अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं. ये एक नेचुरल कंडीशन है एज कंपेयर टू अदर वन, और ये अनकंडीशनल है. ठीक है, हमें अपने बच्चों को प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए किसी कंडीशनैलिटी की ज़रूरत नहीं होती है. तो आपने देखा किस तरह हमने फैक्ट, ओपिनियन, कॉज, इफेक्ट, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, किस तरह हमने इन सब को अलग अलग किया, किस तरह हमने इन सब की एग्जाम्पल शो की, और किस तरह से आपने देखा कि हमने इन सब को डिफाइन किया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. आप काइंडली अपनी बुक्स में से देख लें क्वेश्चन नंबर 3. सो आई एम रीडिंग इट. द क्वेश्चन नंबर 3 इज, here we go. The question number 3 is, what according to Keene is the only revolution that will heal the ills of our society? Now see its answer. According to the author, the only revolution that can heal the society is the positive role of men and women that they can play together in the domain of family building. They are the only people who can teach values to the children and also the morals of love, care and affection. You can call it morals also the morals of love, care and affection. So you have seen that how we have done. I keep the answers very simple ताकि वो बच्चा जो कि इतना strong attention grabber नहीं है वो भी आसानी से इनको समझ सके. Now students, let's move on. Now coming to question number 4. Is the thesis of the essay, The Importance of Family, implied or stated? Implied means giving a meaning which is not clear. Once you have to go through it and then you have to take out the gist. And stated means clearly given. Now let's see whether the message of the story is implied or stated. The answer is, the thesis or the central concern of the essay is clearly stated and not implied. Keene clearly states the importance of family, or he stated the importance of family, responsibility of men and women in building a positive society and teaching the social, moral and ethical values to their offspring. All the arguments, examples and ideas are stating this fact. So it's very clear. The message of the author is very clear. Now dear students, I hope it is clear. Now move to question number 5. What is the point of the 4th paragraph? What does its contents have to do with the thesis of the essay? The answer is, the 4th paragraph describes the fact that once the word economics meant
the art of managing household. However, it is now changed under the industrial influence and gives the sense of the system of production, distribution, and consumption of the commodities. This changed idea has a negative impact on the family and its dignity. The content of this para is exactly in correspondence with the central idea of the essay and its, that is, family life and its implications. Now, dear students, I hope it's clear. Now, question number 6. This is the last question over here in comprehension questions. Keene says, I'm reading the question. Keene says, we heal ourselves by learning to give our children what we did not receive. What does he mean? Do you agree? The answer is, by this statement, he means that it is the universal fact that the things that a person is devoid of in his or her life wants to see doing by their children. Since they can realize its worth of having so, they will be inherently motivated for giving it. He has stated an example of a person who was having a broken family or less responsible parents would understand the parenting well. Now, dear students, it is the end of this exercise. I hope you have found all these comprehension questions very, very easy. You can see ask me anything in the description or in the link or in the comments. And let me make it very clear to you, I will have yet another video जिसमें आप इस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे विद इट्स उर्दू ट्रांसलेशन और जो ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम करेंगे. तो आज के लिए हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का लेक्चर यहीं पे एंड होता है. आई होप यू हैव फाउंड इट वेरी इजी एंड एक्साइटिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe the channel, that is MU Changing Lives. Thank you so much and Allah Hafiz.